This week, our journey takes us to 5 villages in Sehor district, Madhya Pradesh, to meet families that do not have a toilet at home. Nearly 65% of households in rural areas of the state are without toilets. Prema and Tanu belong to a scheduled caste family of daily wagers in Alada Keri. Students of class 9 and 10, they are exposed to children from different socio-economic backgrounds at the government school where they study. They tell us they want to see changes in their lives. मैम बहुत दूर जाना पड़ता है हमको तो लेटरिन खुली जगह है। तो कभी भी तुम्हारे माता पिता ने कभी बनाने की कोशिश नहीं की? तब पैसे आएंगे जब तो बनाने की कोशिश करें। जैसे सरपंच ने कभी दिया हो कोई ऐसा? मैम नहीं दिया अभी तक। जैसे तुम्हारे साथ वाले उन्होंने बनाया था ना, शुरू किया है? हमने बनाया था लेकिन तोड़ दिया। हाँ मैम लेटरिन तो होना चाहिए जहाँ भी हो, मतलब घर कोई सा भी हो लेटरिन तो होना चाहिए सबके घर में। Ram Kumar Bai and Bhavani Singh of Raipur Naya Khera are waiting for the construction of the toilet to be completed. जरूरत थी भाई, बहुत ही जरूरत पड़ रही है की तो। हाँ अब जगह ही नहीं बची ऐसी, जगह ही नहीं है, कहाँ जाए? और सियाना मनक से तो और जवाए भी नहीं किनेंगे, बरसात में तो और भी नहीं जवाए। Kokal Bai in Alada Keri is not so fortunate. Her family uses this toilet without walls and a roof comprising a pan and a pit. They were unable to complete the construction because of lack of money. Kokal is an agricultural worker who earns 1,500 rupees a month. तो आपको सरकार ने 2 साल पहले कितने रुपए दिए थे? 1200। 1200 में क्या बना पाया? गड्ढा खुदिया तो बहू बेटी के साथ तो टांग टूंग के तैयार करियो हमने। और आदमी लोग भी जाते हैं? हाँ हम तो सभी जहाँ अब इसमें। तो लोगों का कहना है कि गांव में लोगों की लेटरिन की जरूरत नहीं है, सब खेतों में जाना पसंद करते हैं। नहीं खेतों में कैसे जाएंगे साहब? Another family in Alada Keri show us a toilet they began building 2 years ago after receiving a government subsidy of 2,500 rupees. Under these covers are 2 pits. The construction stopped midway when money ran out. The family had other pressing demands and could not build the superstructure. लेटरिन जरूरी बनना है, ऐसी बात थोड़ी। बहू बेटी कहाँ जा रात में, कभी परेशानी आ रात कहाँ जाएगी? तो क्यों नहीं बना पाए आप? अब वो तो सहयोग अपने मिले तो अपन बना पाए। अब जोड़ो कम से कम ज़्यादा 700-800 की तो अपने ये सीट आई और नहीं किसी पाइप और ईंट तो मतलब 2,000-2,500 खर्च तो होगा जो भैया, होगा नहीं। तो अभी आप कहाँ जाते हैं? जंगल। बहू बेटियां भी? हाँ तो बच्चे सब जंगल में अभी। लेकिन जरूरत है आपको? पक्की जरूरत है ना साहब। उसमें क्या हम खिलावड़ करते हैं क्या तापने के लिए थोड़ी बनाया वो, क्या उसमें अग्नि डाल के तापे? एक बच्चे की शादी में 1.5 लाख 2 लाख रुपए। 2 लाख जी। Under the Swachh Bharat mission, the centre has now increased the subsidy from 2,500 rupees to 12,000 rupees for a toilet. But the irony is that a family that has received a subsidy once is no longer eligible to claim money a second time. The sanitation policy does not address this problem that affects the poorest. Take Gisya and her husband Bulaki Singh, who are daily wagers belonging to the scheduled caste. Studies show that nearly 77% of the scheduled caste and 84% of the scheduled tribes across the country do not have toilets at home. A major reason is the lack of resources due to underemployment. There's a discrepancy in what the administration tells us and what we hear from the people on the ground. Poor informal labor and agricultural workers in these villages have not received any work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. And the issues of poverty leave an impact on the toilet construction program. This toilet has not been completed because the family has made an extra large 10 feet deep pit and used up all the money. इसको हो गए साल भर, 2 साल हो गए। तो फिर आप खत्म नहीं कर पाए? अब वो कंडीशन थोड़ी आ गई थी इसी वजह से। लेकिन बनाना है आपको? हाँ बनाएंगे। तो इसी के ऊपर ही आप लेटरिन बनाएंगे? इसी के डायरेक्ट ऊपर या अंदर की तरफ? अलग में, वो उस पर छत डाल के और अलग में। छोटे बच्चे कब तक 1-1.5 घंटा लगता है, दूर जाना पड़ता है।
Experts recommend a low-cost option, 2 honeycomb pits of 5 feet high depth and width that are used alternately. One pit can be made initially in case of limited resources. The second pit is required only when the first is filled up, which can take up to 5 years. Few villagers have a proper understanding of this toilet technology and of the fact that costs can range from 10,000 rupees to 30,000 rupees and upwards. Everywhere we went, men, women and children told us that they would rather have a toilet than resort to open defecation. What they seem to lack, however, is the technical know-how to build a functional toilet at a cost affordable to them. ये सही है कि इन लोगों की पुराने टॉयलेट्स बने हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कंप्लीट नहीं हो पाए, बड़ी समस्या है। लेकिन उनको ठीक करने के लिए भी हम विशेष रूप से एक टेक्निकल टीम, हमारे मोटिवेटर्स और अन्य कोई अगर उनको सामग्री के माध्यम से कुछ बेनिफिट देना है वो भी हम देके उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। To some extent, the aspiration to have a toilet has not touched the marginalized population groups in the villages. Take this family belonging to the scheduled tribes in Imli Kheri who live on subsistence wages and migrate seasonally for work. Survival, not sanitation, is their priority. A toilet was constructed for them but was never used. They've not been sensitized to the benefits of using a private toilet. Add to that is the fact that the toilet is of poor quality, typical of a government target-driven approach. However, there are success stories like the villages of Raju Kheri and Dida Kheri, where every household has a toilet. The villages are open defecation free. हमने खुद के पैसे से किया, कहाँ जा जंगल, कौन लेटरिन बैठने दे, तुम्हारे जंगल में बैठने दे, खेत में हमें जगह ही नहीं है, पक्की नहीं है, कच्ची बना ली। आओ अबे तो भरा ही नहीं, 2005 की खुदी हुई 5 फीट जो अबे तक बनी भरी मेरी लेटरिन, फायदा ही फायदा मान लिया। बहुत सारे लोगों में ये भी एक भ्रांति आई कि नहीं ये शौचालय तो फेल है, बारिश में इसमें से पानी निकलेगा और वो लेटरिन ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने करीब शुरू 40 शौचालय बनवाए थे। बाकी जो 40 परिवार जो छूटे थे वो उनको दिक्कत इतने पानी में परेशान हो गए, वो बारिश ख़त्म हुई उनने भी शौचालय बनवाए। 80% जो बीमारियाँ हैं खुले में शौच और गंदगी के कारण होती है, क्योंकि गंदगी तो वहाँ भी होती है, मच्छर पड़ते हैं और वो मक्खी बैठती है उस पर और वही खाने पे बैठ जाती है। गांव में ईंट वीट थोड़ी बहुत सबके पास पड़ी रहती है, 1.5 बोरी सीमेंट, एक गेट वेट करके आज की स्थिति में है शौचालय की लागत जो आज की महंगाई के दौर में 3 से 3,500-4 हज़ार रुपये में आज शौचालय कंप्लीट हो जाती है और मजदूरी वगैरह खुद कर लेते हैं। अभी जो टॉयलेट्स हैं आपने कितने कहा, 115 है ना? हाँ, डिजाइन पे तो सुनो, डिजाइन में तो ये भैया को इनने समर्थन की तरफ से 2005-06 में प्रशिक्षण दिया था राजमिस्त्री का और ये प्रशिक्षित है। अच्छा, जो पानी की समस्या है तो पानी की समस्या के लिए ये हमारी टंकी हो गई उसी समय। हमारे पहले लेटरिन नहीं थी तो बहुत दिक्कत आती थी, बाहर जाना पड़ा था, बहुत देर लगती थी आने में, काम खोटी होता था। फिर हमें ऐसे थोड़ी थोड़ी सलाह मिली, ये समर्थन से लोग आए, इसने भी हमें सलाह दी, तो फिर हमने सोचा कि ये काम तो घर ही होना चाहिए। जिसको मतलब शौचालय नहीं उसके घर बच्चे नहीं दे पाएंगे, संबंध नहीं करेंगे। In these villages, an intensive sanitation drive was conducted by the NGO Samarthan. As part of it, schoolboys like Pradeep are roped in to draw attention to villagers who continue to defecate in the open. They literally blow the whistle on them. 6 बजे सुबह से 6 बजे से ही 5 बजे से डिब्बा ढुलाना शुरू हो जाना, सीटी बजाना, डिब्बा ढुलाना शुरू कर दिया था। तो उसके कारण डर के मारे लोगों ने बहुत लेटरिन बनवा ली और लोग नाराज हो जाते थे। अरे कहीं हो भी जाए, कोई नहीं भी हो, कहीं ने सही सोचा चलो बन जाए अच्छा रहे। Where NGOs are not present, a Swachhta Doot or sanitation campaign volunteer is appointed by the government. There has to be one Doot for every 150 families to trigger off behavior change, to counsel and to do follow-ups. A Doot is paid 1,000 rupees a month, which they feel is inadequate. सभी को जरूरत है मैडम, वैसे बनवाने तो सबको है, सब बोल रहे हैं कि आज बनवाएं, कभी कोई बोलता है कि अभी टाइम थोड़ा पैसे आ जाने दो। जैसे पैसे वाले घर वाले बोलते हैं मकान बनाएंगे जब बनाएंगे, और गरीब घर वाले कुछ कि अभी पैसे की समस्या है थोड़ी, कि किसी के पास ईंट नहीं है, ईंट का बोलते हैं, तो किसी की तो लगी भट्टी,
तो उनको मिल जाती है, किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से लेके आ। अभी 5,000 की ईंट है मैडम, 1,000 ईंट ही। मोटिवेट करके थोड़ा काम राशि बढ़ाना चाहिए, थोड़ा पेमेंट भी। A Swachhata Doot was meant to identify households for toilet construction and to create a demand where there was no demand. A Doot was meant to be a link between the panchayat and the community. But this idea of a field level facilitator was never treated seriously. The state needs 85 lakh toilets to achieve its goal of being open defecation free by 2019, a target set under Prime Minister Narendra Modi's Swachh Bharat mission. We'll have to come to a consensus that every human being requires a dignified, clean, usable, functional space and technology. There has to be a component of subsidy for the poorest of the poor, and the second is hand-holding in terms of giving them the right technology, giving them options which are cheaper but not making them feel insecure when they use the toilets. Currently we have realized that supply of material is a big challenge. There are private players, how they can be involved in the whole process, what kind of incentives can be given to the masons, to the Swachhata Doots, what should be the monitoring mechanisms where people are not using toilets. The resources related to community mobilization, information dissemination have to be properly used. So those are, I think, some of the areas where supply side has to work very hard because there is demand. There is a demand for toilets, yet as the UN points out, more people have access to mobiles than toilets. The reason is, unlike toilets, mobiles are cheap, user-ready, with back-end infrastructure. Toilets demand a lot of work on the ground by the government on a number of issues. After the break, a story from urban India.